सभी को मेरा नमस्कार। विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से चलने वाली इस प्रत्येक शुक्रवार की अनवरत व्याख्यान माला को आज हम एक और नए मुकाम पर ले जाने के लिए फिर से शुक्रवार को आप सभी के सामने उपस्थित है। और डॉक्टर शशि जी, एक बार आप मेरा आवाज उधर वॉल्यूम ठीक है, एक बार बता दीजिए शशि जी। हेलो। नॉट ऑडिबल। अरे ऐसे कैसे हो गया? उनकी तरफ से ही फॉल्ट होगा कुछ। अच्छा, नहीं ये इनको तो सुनाई दे रहा है। डॉक्टर निशांत जी। हेलो। Yes, madam. मेरी वॉइस ऑडिबल है ना? Absolutely loud and clear, madam. ओके ओके ठीक है डॉक्टर शशि जी। हाँ जी हाँ जी ठीक है। मैं सोचा कि पार्टिसिपेंट्स को नहीं सुनाई दे रहे तो दो लोग क्या करेंगे। ओके जी ओके। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है डॉक्टर। आज का हमारा व्याख्यान शुरू करने से पहले मैं आज का टॉपिक आप सबको बताना चाहूंगी। ऑटो इम्यूनिटी चैलेंजेस ऑफ द 21st सेंचुरी एंड इट्स मैनेजमेंट बाय आयुर्वेदा, ये हमारा आज का टॉपिक है। और आज के स्पीकर का मैं सबसे पहले आप सभी के सामने परिचय रखना चाहूंगी। आपका नाम है डॉक्टर निशांत श्रीकांत शुक्ला जी। वर्तमान समय में अभी आपका जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो टोटल टीचिंग एक्सपीरियंस मैं देख रही थी कि जो शुरुआत में रहता था रोग विकृति विज्ञान में और स्वास्थ्य विभाग में भी आपने कुछ समय तक पढ़ाया। उसके बाद अपना मुख्य जो विभाग है काय चिकित्सा में, तो मोर देन 18 इयर्स का आपका टीचिंग का बहुत अच्छा लंबा अनुभव है। और अभी वर्तमान समय में जो आप कार्य कर रहे हैं उसमें भी मैं आपके सीवी में देख रही थी, बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसमें आपने बहुत सारे पीयर रिव्यूड जर्नल्स आर्टिकल्स और नेशनल इंटरनेशनल लेवल के सेमिनार्स में और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आपने अपना प्रेजेंटेशन दिया है। आपके दो पब्लिकेशन है। आपका एमडी डिजर्टेशन मानस रोग एंड इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ द मधुमेह विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ द डायबिटीज मेलाइटस एंड मैनेजमेंट बाय दारव्यादी वट्टी एंड रसोन एंड तिलतेल के ऊपर आपने पूरा किया है। और आपकी पीएचडी भी रोल ऑफ मनोभावास इन द इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ द इसेंशियल हाइपरटेंशन एंड मैनेजमेंट बाय मेद्य रसायन। वर्तमान समय में जबकि आपने एमडी पीएचडी काफी समय पहले किया होगा तो भी ये बहुत ज्यादा प्रासंगिक है। और आज हम अगर इसी विषय को ठीक से समझ सके तो बहुत अच्छी तरीके से आयुर्वेद की भूमिका समाज में अच्छी तरीके से प्रस्थापित कर पाएंगे। आपके जो पीयर रिव्यूड जर्नल्स में डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स है उसकी संख्या टोटल 27 है, जिसमें आपने बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल जर्नल्स में आपका आर्टिकल छपा हुआ है। और मोर देन 10 जर्नल्स में इंडियन जर्नल्स में भी छपे हुए आर्टिकल्स है, जिसमें अदर जर्नल के आसपास भी काफी सारे आर्टिकल है। 30 से ज्यादा नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार्स में आपने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें से 15 में अपनी पेपर प्रेजेंटेशन भी दी हुई है। आपने एज अ स्पीकर बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर अपना ज्ञान को साझा किया है। उसमें भी मैं आपका देख रही थी कि मोर देन 15 प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपने उसका आगाज किया है। टीवी टॉक में भी मैं देख रही थी मोर देन 20 चैनल्स। हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स को भी सुनकर अच्छा लगेगा कि आपने विभिन्न टीवी चैनल्स पर मोर देन 20 चैनल्स पर आपने अनेक आयुर्वेदिक विषय को और खासकर कार्डियक डिसीज ऑन वर्ल्ड हार्ट डे के ऊपर आपने उसको टॉक डिलीवर की हुई है। रेडियो टॉक भी आपकी बहुत सारी है विभिन्न समय पर। और सबसे बड़ी बात की इसका आपने कंपाइलेशन बहुत अच्छा सीवी में लिखा हुआ भी है, प्रत्येक डेट वाइज के किन किन विषयों पे बोला और क्या। तो 17 रेडियो टॉक भी आपने की है। एज अ रिव्यूअर आप बहुत सारी जर्नल में है, एज अ एडिटर आपका बहुत सारी सहभागिता है। तो मैं समझ रही हूँ कि बहुत अच्छे आपके स्किल के साथ आपने अपनी भूमिका
बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो क्लिनिकल हो, चाहे वो रिव्यूअर के रूप में हो, चाहे रिसर्च स्किल के रूप में हो, प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन स्किल के रूप में हो, सभी जगह आपने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। और ऐसे विद्वान स्पीकर को आज मैं अपने इस प्लेटफॉर्म पर आमंत्रित करती हूँ। और आज के व्याख्यान के लिए आपको ओवर टू यू डॉक्टर साहब, आज का व्याख्यान की आप शुरुआत करें। बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब आप म्यूट है। डॉक्टर निशांत जी, म्यूट हटाना पड़ेगा एक बार। नमस्कार। जी जी नमस्कार। नमस्कार। जी नमस्कार। ये वेबिनार का डेकोरम रहता है करीब करीब। नमस्कार नमस्कार। ये वेबिनार का एक डेकोरम है कि अपना माइक म्यूट रखें। मैं करीब करीब 150 से ज़्यादा वेबिनार में मैंने अपना प्रेजेंटेशन और करीब डेली मैं वेबिनार में जुड़ता हूं जो IRES आयुष समृद्धि द्वारा आयोजित होती है। तो इस हिसाब से जब एक स्पीकर बोलता है तो अपना माइक बंद रखने की एक आदत सी बन गई है। तो उसी के चलते मैंने अपना माइक जो है ये बंद रखा था। थैंक यू वेरी मच मैडम for such a nice introduction. May I speak in Hindi or English, which would be convenient? Both, any language Dr. is Dave? fine. Okay. जी। Okay. Is my slides are visible? जी डॉक्टर साहब, हाँ जी, फर्स्ट स्लाइड विजिबल जी। Okay, just I'm making it to slideshow mode. जी डॉक्टर साहब। Now coming on to presentation of my today's topic, that is the autoimmunity and challenges of the 21st century and its management by Ayurveda. Well, before I come to this topic, I would like to highlight one of the most important aspect of the today's era, and especially the developed countries, UK and US. They are now suffering more with the autoimmunity, inflammations, auto-infections, and the immune intolerance. This is a different story what we have in India. In India, we have both the scenarios. The one class is suffering from the infective disorders, and the other class is suffering from this type of the problem. During the COVID-19 era, we have seen the use of the steroids in the infectious disorders. The steroids were used in very limited scenarios or limited condition where the medicines, antimicrobials have the problems. But in COVID, we saw that the use of steroid was extremely done to counteract the immune responses, especially from the fourth day of the COVID infection. We saw that the use of the steroid was initiated to manage the condition. So the autoimmunity is one that we need to work on. I think if we are able to counteract this part, or we have the opportunity to treat this one, then the era of Ayurveda will be there in the 21st and 22nd century. And that's why I've selected this topic. I am dedicating this presentation to my grandfather, Dr. C.P. Shukla. He is my mentor and also a very learned Ayurveda scholar. This is my brief biographical sketch. Already, Madam has narrated all this thing. Now, coming on to the definition, what is autoimmunity? We all know, but let's look into this one. Autoimmunity is the presence of antibody which are made by B lymphocyte and T lymphocytes that are directed against normal component of a person, what we known as the autoantigens. These components are called autoantigens or self-antigens
and typically consist of proteins or proteins complex to nucleic acid. The antibodies or T lymphocyte that recognizes autoantigens are called autoantibodies and autoreactive T cells. Here, before I go in the details of this one, I would like to highlight the definition of rog as per the Ayurveda. Vikaro dhatu vaishamyam, dhatu samyam rogata. And here the interaction of doshas and dushas is of the importance as per Ayurveda. So, if we see from the Western world, the diseases changes due to the external agent, what we name as the microbes, whereas in Ayurveda, the disease is result of the interaction between the external and the internal atmosphere and the immunity, which is responsible for the protecting ourselves from the infection, is acting against ourselves, and this is the autoimmunity. So, what is, if I say this one, how to look into this one? It is the mistake of the immune system which is attacking its on its own. Well, the immune. Yes, please. डॉक्टर साहब आपकी स्लाइड्स मूव नहीं कर रही है, पहली स्लाइड Yes, मूव please. है, मैंने सोचा एक बार बता Is दूं। my voice not audible? डॉक्टर साहब वॉइस ऑडिबल है, Yes. वॉइस ऑडिबल है मगर स्लाइड्स मूव Yes. नहीं कर Yes. रही, स्लाइड्स मूव नहीं कर रही, Yes. है ना? ओनली फर्स्ट स्लाइड डिस्प्ले हो रही है Yes. जी। Yes. 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 ओके जी, ओके ओके. 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 जी जी। ये मुंह क्यों नहीं हो रही है? ये मुझे देखना है. एक बार आगे और करके देख लीजिए आप। The connective tissues. So, in the 1950 era, this were considered in the connective tissue disorder. SLE है, rheumatoid arthritis है, इन सभी को जो है वो उसी श्रेणी में रखा जाता था. और आज जो है, now we have got plenty of the disorder. Almost every organ of the body is affected by the least of these disorders. Now, coming on to the next one, continuing this one, the inflammatory spectrum or the inflammatory process that is occurring due to this autoimmune reaction. This we can categorize into two: pure autoinflammation and pure autoimmunity. This is more a developing concept in the Western world. At present, we don't have this very clear cut concept. For every clinical purposes, we take this as an autoimmune condition and considering all among the autoimmunity only. But the inflammation which is occurring due to the immune factors only, which are not mediated by T and B cells, they are the considered among the autoinflammation without the innate immune response without any apparent cause. So we need to examine the patient with the dhatus also. I have taken up a few references from the Ayurveda, and we can see in Roga Pariksha every time classics mentions the examination of bala. We only interpret the bala as nation of physical strength, but it is basically not the examination of the physical strength, but it is the examination of the immune system and immune response. How we can do it, that is the area of the work or the area of the study. Now, what is pure inflammation? The autoinflammatory condition due to autoimmune factors caused by multiple gene mutations. They are rare monogenic autoinflammatory disease like Crohn's disease, ulcerative colitis, and more. Whereas the ankylosing spondylitis, psoriasis are the autoimmune conditions where it is mediated by T and B cell attack on the healthy tissues. So this is how we can differentiate the pure autoimmunity with pure autoinfection. Yes, madam. Coming on to the disease. Okay. Yes. जी ओके है डॉक्टर साहब, ओके। आ रही है मेरी आवाज? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ओके है डॉक्टर साहब, कंटिन्यू करिए।
Hello. हाँ जी। Visible and okay, fine. हाँ जी। Then we have the clinical conditions where we have the ANA positive. This is often observed in a healthy individuals. The symptoms of the disease may often be absent, but they have the autoimmunity. Then how we can differentiate between autoimmunity and auto-inflammatory disease or autoimmune diseases? The group of diseases caused by dysfunction of innate immunity system characterized by periodic or chronic systemic inflammation, usually without the involvement of adaptive immunity. Now, we have the condition of chronic colitis. This is a very common problem that we face, and in our clinical practice, we often observe this type of condition. Patient comes to us with the complaint, we have not taken anything outside food, we are taking the most purest form of the water, we have installed reverse osmosis RO unit at our plant, and we are making every care that we have the most purified water. And we at our clinics, we may have the difficulty in answering to this question. We see that this is the inflammatory condition, the colons are inflamed. We when we check the patient, when we examine the patient, we find the inflammation in the colons, and this chronic inflammation, they have the changes in the circadian rhythm. Now, the answer to all this is the auto-inflammatory disease, which may be due to the past inflammation, or a past infection which has remained in a chronic stage. Kaఠિન્યાદ ઊનભાવાદ વા દોષોંતો કુપિતો મહાન, like that one. This is causing the problem, and this is due to the auto-inflammatory conditions. This why I'm highlighting only this, because this is the most common problem that we face in our day-to-day practice. Abdominal pain, chronic colitis, these are the condition which we find it in our day-to-day practice, and we have to answer to those questions. So these are the condition, autoinflammation and the innate response. Now, coming on to the autoimmune diseases or autoimmunity. Now, as I have narrated that we have got the investigative profile, and we find that ANA may be positive without any clinical symptoms. So in that case, we need to evaluate the patient with the clinical symptomatology, the ODP of the patient, and what are the characteristics of the patient, what are the characteristic disease pattern that we observe. So whatever be the diagnosis, clinical diagnosis will be of the most important, the negative markers for that specific disease. Now, this I would like to highlight one point here, that in rheumatoid arthritis, the investigatory marker is now of least importance. The protocol that has been revised includes the clinical features, the inflammation, sign of inflammation, sign of pain, sign of swelling in the joints, number of joints involved, morning stiffness. These are the two clinical signs. Then the radiology, and then the serology, specific serology and non-specific serology. All this combined to get a score. And if the patient is having a positive clinical sign, even though they are not having the positive anti-CCP antibodies and RA factor positive or RF positive, they are to be labeled as the patient suffering from rheumatoid arthritis. They are named as seronegative arthritis. So we need to have that clinical sense to diagnose the patient, and the presence of these antibodies, then that's ANA may be positive in the patient with no clinical symptom, but they may be developing the disease in future. The autoimmune disease, on the other hand, is developed due to the autoreactive B lymphocytes and T lymphocytes described above, the cause of the pathological dysfunction or the functional damage. We have got the plenty of the disorder. The kidney is affecting, the liver is affecting, thyroid, Hashimoto thyroiditis. It is a very common autoimmune problem that we face.
in our day-to-day practice. This already I have narrated one. Autoimmune testing versus clinical evaluation. If we are to test serum bodily enough, we find some antibodies in most healthy individuals. And additional proof that antibodies or autoreactive T cells can be present in individuals who do not have clinical evidences of autoimmune disease comes from new type of cancer treatment based on immune therapy. Cancer prevents. These are the words from the site. So what are the factors that is responsible for the autoimmune reaction? Genetic predisposition, hormonal factors, environmental factors, and immune system, they are collectively affecting the autoimmunity. Now coming on to the concept of Ayurveda. What is the concept of Ayurveda? When we see this one, we have got the Bala or the Ojasa. And Vyadik Shamatva or Ojasa, this is classified into two broad groups: Vyadhi Bala Virodhi Tattvam, Vyadhi Bala Pratibandhakatvam iti yavat, and Drayo Dosha Bala Shukta Vyapad Visransanakshaya. The first one, it is related with the immunity, so I'm not discussing with this one. I would be discussing more on the second, that is the concept of Shushruta, Trayo Dosha Bala Shukta Vyapad Visransanakshaya. Now, this Vyapad and Vishransa, these are the two mechanisms which are showing the derangement in the functions of Ojas or the Bala, which is making us remain healthy. Gurutvam, Stabdata, Angeshu, Glani, Varneshya, Vedanam, Tandra, Nidra, Vata Shofo, Bala Vyapadi Lakshanam. So, these are the Bala Vyapad Lakshanam. The last one, the Vata Shofo, the inflammatory process, the catarrhal is the characteristic sign of the auto-inflammatory process. We have the involvement of the dendrite cells, the basal cells, the connective tissues are in the disease process. It may be a tissue of a kidney, it may be tissue of a colon, it may be tissue of a thyroid, it may be tissue of a skin, or it may be a tissue of a liver, but they are all affected with the changes of the inflammation, what we referred as Vata Shofam. When we see the Vishransa Lakshana, Visleshadav Gatranam, Dosha Vishransana Shramaha, Aprachuryam Kriyanam. Now, when we see the Aprachuryam Kriyanam, this refers to the concept of Bala or the Oja, which is making us remain healthy. But in the condition of the disease where the Ojas is responsible, the Ojas is not doing its function properly, the doshas are vitiated to extreme level, and this is leading to the condition of Vata Shofa and the different type of the diseases. Mursha, Mansa, Kshayo, Moha, Pralapa, Agnana, Meva, these are the conditions of Ksha, which we are not dealing with this one at this moment. Now, this is already known to us, Sahaj, Kalaj and Yuktikrita. I am not discussing in too much, but this is the one way how we can use this Bala for understanding of the autoimmunity and autoimmune condition. We may require a lifelong treatment, considering this the condition to be yapya. But at least with the help of these three, considering these three balas, we can definitely plan a proper treatment for a better outcome and improving the quality of life. I'm not discussing this one. The Vishrans is the topic that I need to discuss in detail. When we go with the word Vishransa, this Shransa means shifting from its own area. When we speak the functionality of Ojasa or the Bala, the function of the Bala is to improve the strength, vitality of the body, and this vitality is changed or vitality is deferred. This changes is due to the Shransa Kriya Sannirodasha. This is the functional approach. We do not have that particular parameter at present. The specific parameter what we have in the modern science,
even if we are doing with the different type of the autoantibodies and protein studies, we do not have that specific material or a specific component which we can label this as a criteria or the specific evaluation of bala or ojasa, but we need to work out for that one. This kriya sannirodhas, the functionality of the ojas or the functionality of bala is disturbed, and this results into sandhi vishlesha. When we see the sandhi, this includes all the connective tissues. These are the junctures. It is not only to the asti sandhis, but each and every part of the body which is combining to each other, and this is involved sandhi vipatanam. This is involved in the autoimmune disorder, what we studying in age backs as the connective tissue disorder. Vat, Shofa, Stabda Guru Gatrata, Varna Beda, these are the symptoms. The Agni is important for the autoimmunity. This is very important concept. When we see the normal functions of Agni, Ayu, Varna, Bala, Swasthya, Utsaha, Upachaya, Prabha, Oja, तेज अग्नय प्राण प्रवृतय देह अग्नि हेतुका देह अग्नि it is responsible, and there is involvement of the gut microbiome. If this gut microbiome physiology is altered, it is leading to the leaky guts. This have the two consequences. One is the activation of autoreactive intestinal immune cells, or the antigen production, which the prior year one, if I continue with that prior year one, active autoreactive intestinal immune cells, that leads to autoreactive immune cell migration. This attacks the peripheral body organs and results into autoimmunity and autoimmune disorders. The second methodology or second progression is leaking guts leading to the antigen productions. These leads to activate the autoreactive immune cells in the peripheral organs. This leads to peripheral organ attack and ultimately leading to autoimmune disorders. So these are the two different ways. Now we need to focus on the function of Agni. One more thing I would like to highlight, I have not taken into the presentation, but we have the indirect evidences, that is called the circumstantial evidences. The most developed countries like US and UK and European countries, they have got the best medical systems available. They have got the best medicines. They have got best therapies. They have got the personal healthcare measures. They have good water supply. They have good sanitation facility. But still they are having a large number of people suffering from this autoimmune condition. There is always involvement of the krimi in the physiology of Agni or the malas, which is having the physiology of the body, physiology of Agni, Vayavagni Dharana. If we see the normal functions of Mala, the Vayavagni Dharana is the normal functions of the body. And if we are focusing on the Mala Pariksha, we can have the idea of what may be the today's condition, and whether we can even predict the patient is going to have the autoimmune condition in future or not. But I'm not going in details of that one. I would like to highlight one this portion, the use of the helminth as a potential treatment measure. I'm not reading out this one. Now, coming on to the risk factor, what is leading to the autoimmunity? If we see with the Ayurveda, Vyayama, Ati Vyayama, we need to refer it as Ati Vyayama, Anashana, Chinta, Ruksha, Alpa Pramitashana, Vata, Atapa Sevana, Baya, Shoka, Rukshapana, Prajagara, Kafashonita Shukranam, Malanam, Cha Ati Pravartanam, Kalo, Bhutopagatasha, Gyatavya Kshaya Hetava. If we summarize this one, we have the physical factor, the mental factor of anxiety, stress responses, excessive cough and Shonita Vartana, even Shukra Pravartana, Mala Pravartana.
This are leading to the changes in the body rhythm. Bhutopagata, the infections also is responsible for depleting or producing the changes in the functions of Oja. The risk factors includes the infection. Women are at more risk, genetic predisposition, multiple autoimmune syndrome. A person suffering from the psoriasis may have the different conditions like the gut problem, chronic colitis. Then he or she may have the problem with the lungs, lupus bronchitis. I have seen 4 conditions altogether: lupus bronchitis, SLE, lupus nephritis, and psoriasis altogether. All 4 were present in one single patient, but 2 or 3 problems are often observed collectively as a form of the syndrome. Here we need to focus on the primary factor of immune response, and then each and every system, environmental factors, Kala and Vata and Atapa Sevana, tobacco, smoking, these are the factors which may lead to the autoimmune reaction. So these are the different condition which is responsible with the gut microbiome physiology. I am not going in details of this one as the time is running short and I may have to complete within a stipulated time. But we can see the involvement of the guts or involvement of the Agni with each and every part of the body. Yadannam dihadato jo balvarnagnikarakam tasya vannihi hetuhu nahi apakvad rasadaya. Dysbiosis is responsible for each and every problem of the body, and if we are able to correct this dysbiosis, then we are able to manage this condition very effectively. It can affect each and every axis. It can affect gut-brain axis, it can gut-brain endocrine axis, gut-heart axis, gut-lungs axis, gut-liver axis, gut-pancreas, gut-bone axis, gut-muscle axis, gut-skin, and gut-reproductive axis. So we need to take care of the functions of the Agni. If we recollect the words of Ashtang Hridaya, Rogaha Sarvepi Mandignav Sutram Udaranitu, this is applicable in today's era also. Only the thing is that we need to translate this slok into the present scenario, and we need students to study guide our student with these lines. The psychoneuroimmunology PNI is having the relationship with the mental system and the immune system. The immune response, nervous system, and hormone system, they are collectively maintaining the normal homeostasis of the body. And if the person is in the stress, then it may have the altered immune system, altered immune response, and even the cancer. So collectively, the role of psychology is of the most importance. Sattvam cha shariram, shariram cha sattvam anuvidhiyati. Sattva is affecting the soma, and soma is affecting this psyche. So there is a dual relationship. Ayurveda has narrated this dual relationship. In today's era, we are not in this dual relationship. We are understanding the one relationship of psychosomatic relationship, the impairment of the psychology in the form of post-traumatic stress syndrome, or in the form of acute stress or a chronic stress leading to the pathological disorder. So, but this is what we have. But we see in the present era that there is a 3 pillars of the body that are maintaining the homeostasis: the hormone system, nervous system, and the immune system. They are all governed. They are all affected by a positive mental attitude. And if the positive mental attitude is not there, then there is all changes occurring in the nervous system, the hormonal system. There is a changes in the biohumors, which is regulating the body, and ultimately the immune system also. If we try to recollect the phase of COVID-19, especially in the 2021, the panic of the COVID
was of much more importance. If a patient with a minor symptom, mild symptoms, were getting admitted in the hospitals, and once getting into the hospital, patients were feeling that they are on the deathbed only, which is creating the problem. Though there was only 1 or 2% mortality rate, but this was the scenario. The immune system of the body was not working properly. Instead of making the person immune to the infection, the immune system is was against the body, and the cytokine storm which was due to the psychological stress, was the major problem to the issue, especially from the fourth or fifth day, when the cytokine storm was evident and the patient were having the severe problems. So the involvement of immune system and the psych is an established fact. The psych, if in a present and a healthy psych, the immune system also works in a conditioned manner. And if the psyche is not conditioned, the hormone system, nervous system, and immune system, they also dysregulate and create the problem. Now, coming on to the common autoimmune disorders, if we see the joints and muscle, the most common is rheumatoid arthritis, lupus, lupus disease, systemic lupus erythematosus, and scleroderma. Myositis, it is a very common problem that we often face. Muscular pain, fibromyalgia, they are very commonly observed in the patient. Patient is having seems to be very healthy, but is having a dull pain, chronic pain, and which is making patient miserable. Though the patient is having no clinical sign of any disease, in that condition we need to understand this mechanism of myositis or fibromyalgia. The next one is the nervous system is involved. This includes the multiple sclerosis. I have successfully treated the cases of multiple sclerosis. I will be just putting into this one. I have observed the case of myasthenia gravis. The patient was autoimmune positive, and the patient recovered, but has stopped the medicine before completing the course. Chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy, I have treated 3 or 4 and seen patients being treated with the Ayurvedic medicine. The patients require lifelong medication, but the patient average and quality of life is improved. Ability to do work is established. Continuing work even after 15 years of disease is not a small success. I have a list of the patients which were diagnosed with the demyelinating polyneuropathy and still working today with a limited disability. So Ayurveda is having some promising role to play in autoimmune condition. The common disorders, the digestive system, Crohn's disorder, celiac disease, ulcerative colitis, autoimmune gastritis. So these are the area of work we need to focus. I would like to highlight one more thing in this one. Uh, Parul University, in association with Canadian Ayurveda Center, they are combinedly going to have a short-term course on this system of disease, and we would, this course would be including theory and practical aspects of how to manage this disease as per the Ayurvedic fundamentals. Next is the autoimmune disorders, type 1 diabetes, uh, then Addison disease, Hashimoto thyroiditis, Graves disease. These are the common endocrine disorders. Then the skin and blood vessels related disorders, psoriasis, psoriatic arthritis, dermatomyositis, scleroderma, vasculitis, rheumatoid arthritis, rheumatoid vasculitis, urticarial vasculitis, vitiligo. So these are the different conditions. This is the least of, and there may be more number to be added. Now, how we would go with the treatment of these disorders? This is, and sorry,
what I have just mentioned, it is the concept of the bala which was narrated in the Ayurvedic classics. In each and every patient, before going with the before going and proceeding for the treatment, we need to go with the proper assessment of the patient. And these are the few references. I have just highlighted the references. This is a very popular reference. Atura khalo karya desha tasya pariksha pramana gnana hetu ho bala dosha pramana gnana hetu ho. In our colleges, we are teaching the student about the Dashvidha Pariksha. It's very common, and each and every person with Nidana and Chikitsa are discussing on this aspect, Prakriti, Vikruti, Sar, Sammanan. But the ultimate aim of this examination is to get the longevity status. How long is person going to live, and what is the condition of the immunity? It is the condition of the immunity that is to be decided, and what is the level of derangement there in the body. We need to have a proper assessment scale. I am developing that assessment scale, but as it is under process, I would not be able to share with you at this point of the time. But in future, I may be sharing this with you. I am proceeding with this one, and I have developed a bit of that, and on that basis, I am diagnosing the patient. But it is in the developing stage, so I can't share with you at present. Bala pramana vishesha grahana deha bala dosha bala samanya griyate. That is the basic idea behind this one, deha bala, to assess the deha bala and to assess the dosha bala. Similarly, if we see the 13th chapter of Sutrasthana, here also narrates that Sushukshmam hi dosha beshaj desha काल बल शरीर आहार सात्म्य सत्व प्रकृति वय समावस्थांतराणि. So this bala is once again highlighted in this reference also in the Rogi Pariksha. Similarly, Shushruta is narrating the same thing. Prashnena cha vijaniyat kalam jati satmyam atank samutpatti vedna samuchaya balam antaram agni vata mutra purishanam pravrittim apravrittim kala prakashat Vishwa Visheshan. Here also the bal is there. The same interpretation. Deha dosha prakriti vaya bala agni bhakti satmya roga avasthadinam nana pravavacha. This is the examination narrated in the Kalpasthana. This is before going and proceeding for the therapeutic purification, Vaman or Virejan. At this point of time, we need to understand the status of the Bala, the status of Satmya, the status of immunity and the physical strength. This is the same reference. Bala pramana vishesha grahana deha bala dosha bala cha samanya gruyante. Now, assessment of longevity with both the aspects, the Charaka and Shushruta's opinion. Tasmat aturam pariksheta prakriti vikruti sar samvanan pramana satmya sattva ahar shakti vyayam shakti vaya bala pramana grahana. So the longevity and immunity assessment, that is the bala pramana, to know the bala pramana, these are the guidelines. And if we see Shushruta, the guidelines would be आतुरम उपक्रमेण विषज आयुर्वेदेव परीक्षतव्यम सत्यायुषी व्याधि अग्नि वय देह बल सत्व सात्म्य प्रकृति भेषज देशान परीक्षेत. So these are the guidelines. On these basis we need to I have prepared the questionnaire and I have just use that parameters. We can plan it out for a better a standardized protocol for assessment of longevity and immunity. Now, this I have just narrated all these disorders. So, when treating the Ayurveda, we need to focus on these two factors: whether the disease is occurred from the Amashay Samutta or the Pakwashay Samutta, whether it is due to Ama or whether it is due to Nirama or Swadhayato Vaishyamya or Aganto Nimitta. These are the factors which is leading to the Agni Dushti. I am not reading this one. I am just coming to the problems that may be leading to the problems, that may be the autoimmunity due to impairment of the Agni, impairment of the Amashay function,
leading to the problems of the body. Tasya lingam ajinasya vishtamba sadanam tatha, that is due to the vata, sirsha rukcha murchacha, pramam prushta katigrahe, pitta, jumba angamarda trushna, jwara chardi pravahakam, रोचक अविपाकस्य घोरमन्न विषयं च तत् संसृज्यमान पित्तेन दाहम तृष्णा मुखामयान जनयति अम्ल पित्तंच पित्तंजांश गदान बहुन. These are all the pitta नानात्मक विकार. यक्ष्म पीनस मेहादीन कफजान कफ संस्कृतम. This is due to involvement of kapha. करोति वात संसृष्टम वातजान च गदान बहुन. So the 80 types of vata vyadhis, mutra roga, rasadi roga. So these are the disorder due to the involvement of the amashaya. And if it is directly from the guts also, then we may have the disorders like jwara, mutra krushra, pravahika, hradaya, grahani pradosha, vammi, andha, badirya, shirobitapa. So if we see all this disorder listed in Charak Samhita 15th chapter of Chikitsa Sthana and the Udavarta Chikitsa, we come across the similar type of the disorders. They are all occurring due to the impairment of the bala. Just wait a moment. Sorry for the interruption. Now coming on to the treatment protocol, how we should proceed for the treatment considering the Oja as the Upadhatu of Shukra. So the treatment protocol narrated for Majja and Shukra, they are to be employed for management. Majja Shukra Samuttanam Aushadam Swadu Diktakam Annam Vyavaya Vyayamo Shuddhi Kale Matraya. So the periodic and seasonal circadian purification rhythm and following the circadian rhythm is the key for remaining healthy and preventing autoimmune disorders. Those patients who are at the high risk or they are diagnosed with positive autoimmune markers like positive ANA or patients having the positive family history are required to follow the circadian rhythm strictly. Circadian purification, Vasantik, Vamana, Shardi, Virechan or Shardi, Raktamokshan can help in combating the problem or delaying the onset of the autoimmune diseases. Similarly, the use of Swadu and Tikta in a way, Ashwagandha milk or giving the ashwagandha and milk all together may be of the help. So this can be used for preventive purpose. Similarly, coming Shushrutas aspect, dosha dhatu balakshino vanara swayodmi vardana yat annapana prakangshati. It depends on the dhatus which are involved. If rasa is involved, the medicine responsible for the rasa. If rakta is involved, then the medicines with rakta dhatu. Then mansa dhatu medicines. Meda, then meda dhatu medicine. So we can have the medicine or the drug of the choice. We need to first decide the SOP. And after deciding that SOP, we must select the drugs. This selection of the drug may be based on the doshas, the dushas, and both the ubaya. यद आहार जातम तु क्षीणे पार्थ्यते नर तस्य तस्य सलाभे तु तम तम क्षयम उपोहति यस्य धातु क्षयाद्वायु संज्ञा कर्म नाशेत प्रक्षीणम च बल यस्य नासो शक्यश्च चिकित्सितुम. धातु क्षय and vayu treatment is needed. We need to pacify vayu. We need to regulate vayu. Not pacify vayu. We need to regulate vayu. In Medas also, Stolya, vayu is responsible. In Karshi also, vayu is responsible. In Tamakswas, vayu is responsible. In also, Pitta and vayu is responsible. In diseases related to GIT, vayu is responsible. So we need to regulate the functions of vayu. Even in the case of cerebral functions, the brain functions, in that condition also we need to regulate the function first. Achar Rasayana is the treatment modality. This specifies the mental function
corrects the well-being, psychological well-being, and if the psychological well-being is improved, that will affect the physical well-being also. Satyavadinam akrodam nivruddham maithunat. This, only if this is followed, then also majority of the problem can be delayed. Satyavadinam akrodam. The patient or a person remain in constant stress, irritable behavior is may lead to the problems of the impaired immunity. Madhya Maithuna, excessive use of Madhya, and even the medicines or the food stuff that are behaving in like similar manner. Varun Sevan is responsible for the Medo Dushti. Varunya Chat Sevanat. It is referred as the cause for the Medas Dushti. The combination of food like maida or burger or cold beverages, coca or sandwich with this Coke or Fanta. This is having the similar impact what we see the effect in Madhya. This can be reflected with the reference of Udar Roga, where the Madhav Nida narrates that the use of products from refined flour and drinking cold water leads to the problem of Udar Vikara or the Jalodara. This is the effect. This affects the liver function, and the similar effect is also observed. So, if we are reducing the material which are making changes in the Medas functions, can improve the quality of Medas, and the Prakrut Medas will act will as Bala. The next in the list is Japa, Shocha, Parandiram, Dana, Nityam, Tapasvina, Deva, Go Brahmana, Acharya, Guru, Vruddha, Archana Ratam, Anushansa Param Nityam Karuna Vedinam Samajagaranam Samaswapnam Nityam Shira Grutasinam. Now coming on to the last one, Samajagaranam Samaswapnam. Regulation of sleep timing. Sleeping at a proper time, waking up at a proper time. Maintaining the circadian rhythm is responsible for the proper circadian mechanism of the biohumors. We see these changes in the circadian rhythm, and in the morning there is more immunoglobulins, and during the night time there is plenty of the abundance of the sterols. So to maintain this one, there is harmony of these two things, and if they are maintained in a proper, if this balance is maintained properly, then the homeostasis mechanism of the body will be maintained. And if that is not maintained properly, the samajagran and samaswapna, if not done properly, this may change the biohumors levels, which may have the negative impact on the immunological function. This is the same thing. Now, the shaman therapy, what we can go or what we can do, this is the rasayanam to yadgyayam, yadjara vyadinasanam, and correction of the disease, and Divaya is the Rasayana, then Bruhana Chikitsa, periodic Sodhan Chikitsa, depending on the condition of the patient. We may opt for Vaman Virechan, Rutu Moksha, Rutu Shansodhana, Ahara, and Vihara Paricharya, Sattva Vajaya, Devi Vyapashay Chikitsa. The selection of the medicine, selection of the specific drugs can be done on the basis of doshas, dhatus, or Ubhaya Pratyanika. These are the current trends in the management of the autoimmune disorders. The helminth is used. So how it is acting? It is affecting the immune cells by inducting the tags, induction IL-10 producing TR1 cells, induction of alternative macrophages activation, induction of regulatory dendrite cells, induction of innate lymphoid cells, induction of tough cell-driven type 2 mucosal immunity, which is helpful in immune regulation of Crohn's disease, ulcerative colitis, and other immune disorders. Here I would like to highlight one thing. In Krimi Chikitsa, we have
three modalities. And out of these three, the last modality, that is the Prakruti Vigata Chikitsa. This is the most unique concept of Ayurveda. You can find my article on this one. This is published in the international journals, and I have used certain medicine in treating the chronic inflammatory conditions of hepatitis B, and I have successfully treated those patients and have the negative HBsAg and negative uh, viral. This is the similar article on the action of helminth and the disease. This is also the third article. Here, based on target-driven strategy, we successfully identified small 3K DEA peptide from egg extracted from cyclostome, which promoted both human and murine tracts production, presented immune suppressive function by arresting dendrite cells at an immature stage, argumenting the proportion and suppurative capacity of tracts. So these are the some new trends in treatment of the disease. This is the next trend, the present way of treating the autoimmune disease. It is the gut microbiome physiology. If the gut microbiome is produced and colonized resistance, this improves the host response both locally and systematically, and the metabolism. This we can do with the Basti. We have narrated that the Basti is Ardha Chikitsa. All explanations have been given in the treatises, but in the 21st century, we need to give this explanation to our students, especially our postgraduate students, that the gut microbiome or the brain and gut brain axis can be regularized, that functions can be synchronized with the help of the Basti treatment. If we are using the Basti in Kala, yoga or karma alternative, sneha basti and anuvasan basti would be of the help in treating the different medical conditions. This may be a unique, it's not only a unique drug delivery, but it is a complete treatment in whole. So it can affect the primarily at gut level, the gut microbiome function. If improved, the microbiomes help in correcting the functions of brain, lung, pancreas, intestine, kidney, liver. So the vital for all vital bodies organs are corrected with the proper metabolic function of the microbiome. Now, coming on to some cases of the autoimmune conditions that I have successfully treated, I am sharing a snap of a patient who was diagnosed with ITP, thrombocytopenic purpura. You can see the patient came to me in 2013, May 2013, and at that time the platelet was 30,000. Patient was on steroid. Now, after 15 days, after third day, the steroid was discontinued after starting with the Ayurvedic treatment. There was a sharp fall in platelet count. The same Ayurvedic treatment was continued, and the on the 5th of the June 13, the platelet rise to 17,000. On 12/6/13, it rose to 29,000 at the level from where it was started. In in October 13, it has reduced mild to some extent, but from December 13, it started increasing and it reached to normal after 1 year of the treatment. The treatment details, the patient details is the patient was 11-year boy having no positive history of any autoimmune disorder, no history of any metabolic disorders, proper vaccination history. Patient had initial issue of fever, then the patient developed ecchymosis and bleeding from the gums as well as from the urine hematuria. The patient was evaluated at Ahmedabad in 2010. The treatment was given
at Ahmedabad. After 3 years of treatment, there was no response in the platelet measures. The platelet were remaining at a stagnant level or changing with the medicine. And after discontinuing these medicine, the patient has improved completely. Patient's medicines treatment has been stopped in 2015. From there onwards, and today, I have talked with that patient before a couple of days, and he was having a normal platelet count. So this is the success what I got in my practice. The treatment that I give to him, it is as per the uh, रक्तपित्त चिकित्सा 8 मृद्विक पथ्य क्वाथ शर्कर and वैदुर्य मुक्ता मणिगैरिकानम मृच्छंक हेमा मलकोदकानम. This too I have used for the management of the patient. Along with that one, I have used the Shatavari for improving the Bala, Dhatrilo and Chandrakala with Guruchi Swaras for improving the dosha function, improving immunity modulation. This is the patient of psoriasis, patient having complaint of scale diagnosed as psoriasis, had fever in month of 2011, treated with modern medicine. Patient gradually developed bone marrow depression. Aspiration was hypoplastic anemia. The mildly reduced hypoplastic changes is due to Sarakshaya, which is to be managed as per Rasayan therapy. So production of myeloid cell may be regulated. Patient was on homeostatic, erythropoietic and steroid. Patient has been advised to continue iron treatment with the above principles: Shatavari, Pittagna, Santarpana and Rasayan used with Dhatrilu and Chandraprabha. Treatment was continued for 1.5 years. The hypoplastic marrow treatment was long. The patient was taking the medicine and has a normal blood indices. These are the indices levels. This one more article has been published in the international journal. You can get this. It is the case of multiple sclerosis, a different variety of autoimmune disease. The patient was diagnosed at Ahmedabad with all relevant biochemical and pathological, radiological, electrophysiological parameters, consulted for progressive weakness, sudden pain in both the limbs, having no history of any medication, surgery, of injury. The patient was 24 years male, non-diabetic, non-hypertensive. This is also published in the These were the before treatment and after treatment MRI findings. On the 5th of the August 2014, his MRI findings were multifocal numerous cord lesion and asymmetric multifocal cerebral lesion in periventricular white matter along with calcoseptal margin enhancing single lesion in cord as described, possibility of primary demyelinating lesion, possibility of multiple sclerosis. On the February 2025, the follow-up MRI suggested the static with the reduction in few lesions. So in a short period of time, some 6-month period of time, the patients shown marked recovery. Patients shifted to African countries, and there is problem in delivering the medicine to the African countries. But patient has continued with the Sukshma Basti that can be taken by patient itself in form of a retention enema. I have given the Mahanarayan Tel enema to that patient, and patient can continue with that one with the self-care. The patient condition is stable even after 10 years of treatment. At present, patient is not on active treatment, but he is on enema and ashwagandha and piplimul. This only the two things are given to the patient at this moment from 2016, but I don't have the record of 2016, so I'm not able to share with you. So summing up this presentation, Ayurveda has narrated Bala Pariksha, which is suggestive of immunity evaluation. Autoimmune disorders are not different disorders, but they are
having a different mechanism of disease pathogenesis. Use of antibiotics, lifestyle changes leads to the changes in the gut microbiome physiology, which is ultimately leading to the autoimmune disorders. Developed countries with most updated healthcare delivery system is suffering from this problem more as compared to the underdeveloped countries. Rasayan is the management protocol for treatment of such disorders. Selection of medicine is based on the dosha dusha sammurchana. So selecting the specific medicine is based on the clinician's expertise, and the selection of the procedure, medicine and procedure lies with the physician, the condition of the patient, condition of the illness, the area from where the patient comes. So that all depends on these parameters. So one can select the disease as per the protocol of the treatment, what objective is to be attained for management. So with these words, one more case I would like to add here, that is the case of the oral pemphigus. This I have got in the month of June 2020, and by the end of November 2020, there was a complete reversion of the symptoms in the oral pemphigus. So these are few cases that I have treated successfully only with Ayurved medicine. I am not practicing Panchkarma. I am using only the Shadopakrama for the managing the condition. These are as per the learning that I have got from my grandfather, Dr. C.P. Shukla. I have worked under him from 1995, the day I got admission in the BMS course, to 2005 till I completed my MD. So, with these words, I conclude my presentation. I am thankful to NIA Jaipur for allowing me and inviting me to present on a very important topic. I am thankful to Dr. Daveji, Hetal Daveji, for giving me the chance to speak on this issue, and all the participants, uh, they have made me able to speak without any problem. मैं उनका शुक्रगुजार हूँ. ऑनलाइन में तो गनीमत ये होती है कि अंडे या टमाटर फेंके नहीं जा सकते, पर आप लोगों ने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया, वो भी मेरे लिए आशीर्वाद के समान है. आपको अगर बोर किया हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ. आपको अगर अच्छी नींद आई हो तो मुझे इसके लिए मैं आपका मैं सहृदय स्वीकार करता हूँ. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत ही बढ़िया आपने बेसिक इंफॉर्मेशन से इसकी शुरुआत की, और मैं समझती हूँ कि इस मंच की स्थापना योगेश जी मिश्रा भाई साहब के मार्गदर्शन में 2015 में 14 नवंबर को इसका जो डिसीजन लिया गया, और 21 नवंबर 2015 से इस व्याख्यानमाला की ऑफलाइन शुरुआत हुई और कोविड में ये ऑनलाइन किया. तो मुझे लगता है कि अनेक श्रेष्ठ वैद्य की निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सतत चलती रहे, और प्रत्येक दिन प्रत्येक वैद्य आगे से आगे अपनी चिकित्सा कुशलता को बढ़ाता रहे. और मुझे लगता है जो आज का टॉपिक और आपका प्रेजेंटेशन उसमें अनेक गुणी वृद्धि करेगा, बहुत ज़्यादा वृद्धि करेगा, कि कहीं ना कहीं प्रत्येक चिकित्सक अपने अपने योगदान को फिर से बहुत गुना बढ़ा सके. तो ये सच में बहुत अच्छा था, और मैं समझती हूँ कि सभी को बड़ा उपयोगी रहेगा. बहुत सारे लोगों ने सराहना भी की है. डॉक्टर उषा होला, डॉक्टर सबीना, आप नेपाल से हैं और नेपाल में चिकित्सा करती है. यहाँ हमारे पास जयपुर में आप एक कोर्स है स्त्री रोग चिकित्सा, स्थानिक स्त्री रोग चिकित्सा, उसको करने के लिए आई थी, और तब से आप लगातार इसको ज्वाइन कर रही है. और उसने कहा भी कि सर हमें बिल्कुल बोर नहीं हुआ. डॉक्टर उज्ज्वला, डॉक्टर सोहम, डॉक्टर किमाया, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर नवीन जी, डॉक्टर सभी ने, डॉक्टर रजनीश जी, सभी ने आपके लेक्चर की बहुत सराहना की है. और मैं समझती हूँ कि ये
आगे अभी यूट्यूब पे भी मैं अपलोड करूँगी, तो सबको बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेगा। मैंने किसी को भी अपना प्रश्न पूछना हो तो अनम्यूट करके वो अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आप हैंड रेज करिए, तो हम प्रत्येक दिन की तरह इस सेशन को भी इस तरीके से आगे बढ़ाएंगे कि आप अपने जो प्रेजेंटेशन में और अधिक फ्रूटफुलनेस आए, ऐसा हम इसको तैयार कर सके। डॉक्टर विष्णु चौधरी जी, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आपने पूर्व में भी बहुत अच्छे अच्छे सेशन हमारे इस व्याख्यानमाला में लिए हैं, और आप तो आशीर्वचन भी दीजिए। और जी विष्णु जी। Namaste, madam. Namaste, sir. Very excellent and informative information. Is very for all. We are also learning many things today. As a new aspect, sir has been given regarding autoimmunity and Ayurveda. Of course, it is a big challenge for the clinician to treat autoimmune diseases, and always new theories in modern science is giving like leaky gut syndrome. Whatever I understand, people are modern. We have also many counterpart, and we are also many friends of modern medicines. They never believe that, they never considered that what arm we say that is absorbed from the intestine and digested protein part. Now this leaky gut syndrome is coming up. So new thought, this is like gut brain. Whatever we are always we are telling this Mahasrat, this is main and Agni. So now modern science also accepting. Thank you, sir, for your nice and informative presentation. Sir, one query from my side, that you have explained one case that is autoimmune thrombocytopenia. So how we correlated with our, this is Rakta Pitta, we know that is we are considering Rakta Pitta, and how we'll consider with our treatment, what you told, and in connection with the immunomodulator, whatever our Ayurveda perspective. Thank you very much, sir. Now, well, treating these disorders, we need to understand the concept of murchana, because in this one we know that this is autoimmunity. The autoimmunity is responsible for the changes in the doshas, and whatever the condition we have, the presenting symptom or the involved tissue will decide the line of or the approach of treatment. In the case of autoimmune disorder, that approach only, and treated in a similar way of the Rakta Pitta. Basically, it is considering as the condition of Tiryak Rakta Pitta, the blood is coming out. In Rakta Pitta, we have got the two different mechanisms. The first mechanism is the Yakrut pliha prabhavanam lohitavaha srotasam lohita bishyanti guruni mukhani asadyat pratirundyat. So, in this condition, we have the melena or the hematomasses, and the other condition, Sanyuga Dushna Tattu Samanya Gandhavarna Yoho. And considering this fact, the involvement of Pitta and the Rasa Rakta, I have taken the medicine and I have shared the medicine also. The medicine that I have used is Shatavari for the Pitta Shamana, as it is acting as a rasayan also, the rasayan of Rasa, because the Rasa Dhatu is primarily involved in the Rakta Pitta, Rakta and Rasa both are involved. And the next one, it is the Dhatri Loha, considering there is mild involvement of Pandu, because in understanding or treating the condition of Rakta Pitta, we need to pacify Pitta also. And the Rasa Rakta and Pitta both are involved in Rakta Pitta and also the Pandu. In Pandu, only the one thing changes there, the Agni or the Daha Guna of Pitta is more prominent, which is leading to the changes in Rakta Poshak Sarabhaga.
रक्त पोषक सार भाग क्षयात, रक्त पोषक सार भाग अनुत्पादाच. Similarly, in the condition of Raktapitta also, the thrombocytopenia also, we have got the two phenomena. Either the platelets are not produced in enough numbers, or they are not able to continue their normal lifespan, and before that lifespan they get destroyed. So this medicine which is useful for Pandu, that can be used, and I have selected Datrilo. Datrilo is product used in Gujarat only. It has got the low basma, which is triturated with Guduchi and Amalki. The Amalki and Guduchi are more of the importance. It contains the Guduchi, which is having that immunomodulatory action, and enhancing that immunomodulatory action. I have given the Guduchi Swaras along with that as a vehicle Anupana. Some articles has been also. Guduchi is found to be responsible for the autoimmune hepatitis. In this condition, I would like to share my opinion that I have not seen any of my patient which is having the altered immune response, though it was given in an autoimmune disorder. ITP is an autoimmune disorder. I'm using it for all type of the bleeding disorder. I'm using it for the hemoglobinopathies, and I'm getting the excellent results. These are as per my grandfather's opinion, and I'm adopting that one the same. He has given this explanation, and this is as per the Charaka only. We can regulate the armor. One more thing is one more thing I would like to add to this is the arm pachana. Arm pachan, we need to do it, and if we are able to regulate the metabolic function, Ampachan at the level of GIT, second Ampachan at the level of Dhatus, the Rasa and Rakta Dhatvagni functions, if are regulated properly, so we can have a good improvement. Dhatrilo is a medicine which can be useful in correcting. Guduchi is a medicine which can be used for correcting the Rakta Dhatvagni. I think this Thank you, sir. explanation Thank you, is sir, for enough. your expertise. It will If help us to more, practice in our clinics also. I congratulate Madam Hatel Dave for continuing this program since 2015. Lots of people are gaining near. Means I am from extreme side of India, that is from Shillong. You are from Jamnagar. I am learning from you sitting at home. I am also very grateful to all of you. Thank you, sir. Thank you, madam. जी, बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर विष्णु जी। अ, आपने भी हमेशा, मैंने जब भी कहा, बहुत सारे स्पीकर्स के नाम भी बताए, है ना? क्योंकि ज़्यादातर मेरा ये रहता है कि भई मैं स्पीकर को ही कहती हूँ कि सजेस्ट मी 2-3 नेम्स ऑफ द स्पीकर्स। तो कहीं न कहीं आप सभी के अमूल्य, अतुलनीय योगदान से ही ये चल रही है व्याख्यानमाला, और जिससे बहुत बार जब स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि मैंने इसके नोट्स बनाए, मैंने इस तरीके से सीखा, मैं इसको यात्रा में थी नहीं सुन पाई, है ना? तो ये सारी चीज़ों को हम बड़े तहे दिल से, कहीं ना कहीं मेहनत आयुर्वेद के अच्छे दिन लाने के लिए रंग लाएगी, ऐसा सोच के और मेहनत करने को मन करता है कि नहीं और भी करेंगे, और भी बहुत सारे लोगों को पूछेंगे कि आप ज्ञान यज्ञ में योगदान दे दीजिए, और बहुत सारे लोग मिल भी जाते हैं। जी, कोई पूछना चाहता है अपना प्रश्न? शायद किसी ने अनम्यूट किया था। ओके। सर, इसमें आपने कहा कि कृमिग्न चिकित्सा भी हम क्या सर, इसमें आपने कहा कि कृमिग्न चिकित्सा भी यूजफुल रहेगी, तो हम कृमिग्न बस्ती या फिर ये जो है नहीं, ये दोनों को मिक्स अप मत करिए। कृमिग्न चिकित्सा जो है ये आयुर्वेद का एक पूरा अलग पक्ष है। कृमि का यूज हो रहा है। अब कृमि जो गट माइक्रोबियोम जो डिस्ट्रॉय हुआ है, उसकी कॉलोनी जो डिस्ट्रॉय हुई है, उसमें कहीं ना कहीं जो हम लोगों ने चेंजेस किए हैं हमारे लाइफस्टाइल में, ये उसका एक बड़ा कारण है।
आज हम एंटी हेलमेंथ को काफी यूज कर रहे हैं। अगर आयुर्वेद में हम देखें तो कृमि की चिकित्सा बताई, मुझे तो केवल एक ही चीज हाईलाइट करनी थी कि हमें जो प्रकृति विघात की चिकित्सा है उस पे हमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। कृमि भले रहे, पर कृमि जो है ये शरीर में रोग उत्पन्न करने की स्थिति में ना रहे, ये उपयोगी है। अगर हम पीएसएम के नजरिए से देखें तो ह्यूमन बॉडी जो है ये सबसे बड़ा रिजर्वायर है। हम माइक्रोब्स को मानते हैं रोग के लिए, ये बात सही है। एक्सटर्नल फैक्टर्स माइक्रोब्स जो है ये रोग उत्पन्न करने में सबसे ज्यादा कारणभूत हैं, पर उसके साथ साथ जो इंटरनल स्ट्रेंथ या फिर इंटरनल इम्यूनिटी या फिर बॉडी फंक्शन है ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम ट्रांसमिशन चेन को कंट्रोल करते हैं तो इन्फेक्शन नहीं लगेंगे। आज हमारी जो ट्रीटमेंट मेथड है इसमें एंटी माइक्रोबियल्स है, और एंटी माइक्रोबियल्स की ये इतनी प्रॉब्लम है, केवल माइक्रोबियल रेजिस्टेंस नहीं, आज माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के साथ साथ मेटाबॉलिक डिजीज की जो मेडिसिन है उनमें भी रेजिस्टेंस आ रही है। आज की अभी कोई चर्चा जो है वो नहीं कर रहा है। इसी के साथ साथ हेल्थ इकोनॉमिक्स में मुझे 2016 में इस टॉपिक पर मुझे इनवाइट किया गया था बर्लिन में, और मेरा वहां पर वीडियो प्रेजेंटेशन था। वहां पर मैंने जो है ये टॉपिक रखा था कि किस प्रकार से हम अफोर्डेबल मेडिसिन विथ आयुर्वेद रख सकते हैं, और मैंने अपना प्रेजेंटेशन किया था एंटी डायबिटिक्स पे। आज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में भी हम देखते हैं कि जो मेडिसिन है वो इतनी कारगर नहीं है, तो हमें इन चीजों को समझना पड़ेगा। हेलमिंथ को मैंने जो है ये रखा था इसलिए कि आज की जो ट्रेंड है, गट माइक्रोबियम की ट्रेंड है, हेलमिंथ की ट्रेंड है, हम हेलमिंथ को निकाल रहे हैं। हम जो है ये आज हमारी इस प्रकार से सोच बन गई है कि बच्चों में आते हैं कृमि है तो उसको जो है वो कृमिक मेडिसिन दे दो, एंटी हेलमिंथ दे दो, एक बार हेलमिंथ निकल जाए। पर हेलमिंथ का एक इम्पोर्टेंट रोल है बॉडी फिजियोलॉजी में। हाँ, वो शक नहीं करने चाहिए बॉडी फ्लूइड्स को, न्यूट्रिशन को, वो हमें देखना है। और उसके लिए प्लस उसको डीएक्टिवेशन के लिए जो ट्रीटमेंट मोडालिटी है ये प्रकृति विघात है। प्रकृति जो है ये वर्धन का कारण करती है, और जब उनके कारणों को हम अटकाते हैं, विघात मीन्स उनके कारणों के संपर्क में ना आना, ये प्रकृति विघात है। और उसमें जब हम यूज करते हैं कटु तिक्त कषाय रस प्रदान क्षार प्रदान आहार है, सॉरी औषध है, तो उसके कारण होगा ये कि कृमि जो है ये बिल्कुल नहीं निकलेंगे। आपके जो है वो कृमि रहेंगे पर वो एक्टिव नहीं रहेंगे, वो स्पोर फॉर्म में इंटरनल एरियाज में रहेंगे, पर वो एक्टिव जो है वो एक्टिव होकर के ब्लड को सक करके, न्यूट्रिशन को सक करके ये बॉडी में डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेंगे, एनीमिया नहीं करेंगे, लिवर डिजीज नहीं करेंगे, किडनी डिजीज नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से हमें जो है ये अपनी ट्रीटमेंट में चेंज करना पड़ेगा। अगर हम एंटी माइक्रोबियल्स लेते हैं तो उसके साथ साथ हमें आयुर्वेद मेडिसिन 100% यूज करना चाहिए। इवन अगर सिंपल पायोजेनिक इन्फेक्शन है और उसमें भी सिंपल नॉन स्पेसिफिक फीवर का भी है या फिर पायोमिक फीवर है, तो उसमें भी साथ साथ हमें ट्रीटमेंट में अभयादि क्वाथ या फिर इंद्रजव या फिर किरातिक्त त्रिभुवन कीर्ति उसका हमें यूज करना चाहिए। किरातिक्त का अगर हम यूज करते हैं तो वो बड़ा बढ़िया है, क्योंकि ये आम पाचन भी करेगा और गट्स को भी ये ठीक रखेगा। और उसके बाद हमें थोड़ा दुग्ध का भी सेवन जो है ये करना पड़ेगा। ज्वर की अंतिम अवस्था में दुग्ध सेवन हम कर सकते हैं, घृत का सेवन कर सकते हैं। तो घृत सेवन अगर हम करते हैं तो हम माइक्रोबियोम को रेगुलेट करते हैं। अगर हम ज्वर चिकित्सा में को ही देखें और अतिसार चिकित्सा में देखें तो दोनों जगह पर ये चीज कॉमन आती है कि वहां पर का यूज किया गया है। गृहिणी चिकित्सा में भी अगर हम देखते हैं तो घी को जो है वो सर्वाधिक महत्व दिया गया है। दधिदाड़ी मसिद्धेन बहुस्नेहेन भोजयति अतिसार में है, श्लेष्मातिसार में है। और स्नेहमेव परम विद्या दुर्बलानलदीपन नाहम स्नेह समिद्धस्य समायानम सुगुर्वपि, ये गृहिणी की चिकित्सा में है। इसको हम गृहिणी के साथ अगर हम लेते हैं, गृहिणी अगर स्वस्थ है तो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। मैंने रेफरेंस गृहिणी का इसमें रखा था। तो अगर हम गृहिणी को ठीक कर लेते हैं तो
खुद ब खुद जो है वो रोग ठीक हो जाएंगे। तो थोड़ा घी को हमें यूज करना चाहिए, गाय का घी हमें यूज करना ही चाहिए। आज हम स्नेह को यूज नहीं कर रहे हैं, घी और तेल को यूज नहीं कर रहे हैं, ये बड़ी गलती कर रहे हैं। गाय का घी खाने में यूज होना ही चाहिए। दिस इज माय ओपिनियन। मैं अपने हर एक पेशेंट को ये कहता हूँ कि आप गाय के घी को यूज करिए। हाँ, मोडेस्ट क्वांटिटी में 10 to 15 ग्राम पर डे, उससे ज्यादा नहीं, पर 10 to 15 ग्राम्स 20 ग्राम्स पर डे इट इज एडमिसिबल लिमिट, और ये यूज करना ही चाहिए। तिल का यूज करो, दूसरे किसी भी प्रकार का ऑयल नहीं, राइस ब्रांड नहीं, दूसरा कोई ऑयल जो है वो ठीक नहीं है। उज्ज्वला जी ने सवाल किया, यस प्लीज। नमस्ते सर, बहुत ही अच्छा था सेशन। और मुझे 2-3 सवाल है मेरे सर। तो एक जो कि अभी पित्तज ग्रहणी के पेशेंट बहुत ज्यादा आते हैं, क्योंकि आहार सेवन तो होता ही है पेशेंट का अपथ्य कर, तो वहां पे मुझे थोड़ा सा डिफिकल्टीज होती है पित्तज ग्रहणी में, कि वहां पे हम पित्त को बाहर निकाले, अविपत्ति कर चूर्ण जैसे देखे, या फिर ग्राही चिकित्सा करे, मतलब कैसे चिकित्सा करे वो मुझे समझ में नहीं आता देखिए, ग्रहणी जो है, देखिए पित्त अतिसार 3 अलग अलग कंडीशन समझनी पड़ेगी। पहले तो ग्रहणी, अगर हम केवल उसको ट्रांसलेट करें, क्योंकि ये ट्रांसलेशन थोड़ा इजी समझाने में इसलिए रहेगा क्योंकि जो मॉडर्न में जो टर्म्स है ये काफी क्लियर है। तो जब हम ग्रहणी करते हैं तो हमें स्पेसिफिकली जो प्रॉब्लम रिलेटेड टू डिओडिनम है उसको हमें लेना पड़ेगा, और उसके बाद जेजुनम तक का, कि जो कि माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम के साथ रिलेटेड है। यहाँ पर मल जो है वो बद्ध अबद्ध, पक्व अपक्व मिश्रित आएगा। उसी प्रकार से अगर आंव के साथ आता है तो ये पित्तातिसार या फिर पित्त प्रवाहिका होता है। क्रॉनिक कोलाइटिस में जहां पर ये कंडीशन मिलती है कि पेशेंट में फ्रैंक ब्लड जो है ये नहीं आता है, और ऐसी कंडीशन को हम पैत्तिक ग्रहणी मान करके ट्रीटमेंट कर देते हैं। पर बेसिकली इसमें जो ट्रीटमेंट ज्यादा रहती है वो अतिसार या फिर प्रवाहिका की रहती है, कि जो कि पक्वाशय का विकार है। अगर पेशेंट में डायरियल सिम्टम प्रोमिनेंट हो और बर्निंग के साथ हो, तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कुटज को थोड़ा पाचन औषधों के साथ, फिर आप उसमें शंखवटी यूज कर सकते हो, फिर आप उसमें चित्रकादि यूज कर सकते हो, या फिर आप दाढ़ीमाष्टक यूज कर सकते हो, उसके साथ आप यूज करें। अगर आपको प्योर ग्रहणी जिसमें माल एब्जॉर्प्शन के सिम्टम्स आपको साथ में मिल रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में घी का यूज जो है ये करना, साधित घृत को अगर यूज करते हैं तो वो ज्यादा बेहतर रहता है। यहाँ पर चित्रक का रोल ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चित्रकादि को अगर हम यूज करते हैं इसमें काम करता है। तो गंधक रसायन, ये 2 हम यूज कर सकते हैं। गंधक रसायन को बेसिकली हम स्किन डिजीज तक सीमित रखते हैं, पर गंधक रसायन का भी यहाँ पर एक रोल देखने को मिलता है कि हम उसको यूज कर सकते हैं। आई थिंक आई हैव गिवन योर आंसर। इफ यू नीड एनी मोर स्पेसिफिकेशन, अगर आपको कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप पूछ सकती हैं। सर वही जैसे पेशेंट में है ना, मल प्रवृत्ति भी होती है ज्यादा, और वहां पे उनको आधमान जैसे भी लक्षण होते हैं, उदर शूल भी होता है, तो वहां पे कल्प का योजना करना मुश्किल हो जाता है, जहाँ पे वात भी है और पित्त भी है। तो वो भी मुझे कुटज को आप जो है, कुटज वत्सक को आप इसके साथ दो, हिंगू के साथ, ठीक है सर, या फिर हिंगू की प्रोडक्ट के साथ दो, चित्रकादि के साथ दो, शंखोटे के साथ दो। कुटज को कुटज रस क्रिया की तरह से बना करके आप दे सकते हैं। वृद्ध गंगाधर दे सकते हैं यहाँ पर। धन्यवाद सर। और डायबिटीज पेशेंट आते हैं ना हमारे पास, तो जब हम पहले तो लक्षण और दीपन पाचन जैसे उनके दोषानुसार लक्षण रहते हैं, तो हम पाचन करते हैं, तो उनका कोई भी थायराइड का पेशेंट हो या जो कुछ भी डायबिटिक पेशेंट है, संतर्पण जन्य आते हैं, तो हम उनको दीपन पाचन करते हैं, तो उनके टेस्ट सब नॉर्मल आ जाते हैं, और फिर बाद में फिर से थोड़ी दिन के बाद वो टेस्ट उनके फिर से एबनॉर्मल आते हैं, तब हमें कुछ भी लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। तो अब हमें कहाँ सोचना है कि चिकित्सा का विचार जहाँ पे लक्षण भी नहीं दिखाई देते।
मैं एक आपसे सवाल कर सकता हूँ? हाँ जी सर। आप एमडी स्कॉलर हैं या टीचर हैं? नहीं सर, मैं प्रैक्टिशनर हूँ, स्कॉलर नहीं हूँ, बीएमएस किया है। ओके 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 फाइन, ओके फाइन। तो अगर आप टीचर, यहाँ पर मैं अलग तरह से जवाब दूंगा थोड़ा। हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट ये रिजल्टेंट है डायबिटीज का, ये मार्कर है डायबिटीज का। इनफैक्ट इट इज नॉट डायबिटीज। जो लिपिड पेरोक्सिडेटिव चेंजेस हो रहे हैं बॉडी में, ये इसको हमें डायबिटीज समझना पड़ेगा। मेदश्च मांसम च शरीरजम च क्लेदम बस्तिगत प्रदूष्य, क्लास की लाइन को छोड़ दीजिए, पर मेदस और मांस ये दो जो है ये मुख्य दोष हैं। और मेदस और मांस की जब हमें ट्रीटमेंट करनी होती है तो वैसे भी इसकी ट्रीटमेंट हमें काफी लंबे समय तक करनी पड़ती है। और दोनों को पैरेलली कंट्रोल, केवल एक ही ऑब्जेक्टिव ट्रीटमेंट का नहीं होना चाहिए। इस चीज को मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं केवल अपने अनुभव से कह रहा हूं, ऐसा नहीं है। ये डॉक्टर हेनरी डॉगलर ने अपनी बुक हाउ टू लिव विद डायबिटीज में इस चीज को हाईलाइट किया। अगर आपको मिल सकती है बुक तो आप जो है वो लीजिएगा। और उसके प्रियम्बल में उन्होंने इस चीज को जो है ये हाईलाइट किया है। इसका मैं सारांश यहाँ पर आपके पास रखना चाहूंगा कि डायबिटीज एक पूरा जो है ये मल्टी फैक्टोरियल इलनेस है, और उसका एक कॉमन फीचर है एलिवेशन ऑफ ब्लड शुगर। और आज जो भी हम काम कर रहे हैं 20वीं सदी में, जो भी डॉक्टर्स, जो भी चिकित्सक काम कर रहे हैं, वो केवल और केवल ग्लाइसीमिया को कंट्रोल करने के लिए काम कर रहा है। पर डायबिटीज उससे कहीं ज्यादा अलग है। हाई नॉर्मोग्लाइसीमिया होते हुए भी हम देखते हैं कि पेशेंट को एंजियो न्यूरोटिक चेंजेस होते हैं, माइक्रो एंजियोपैथिक चेंजेस हो रहे हैं, मैक्रो एंजियोपैथिक चेंजेस हो रहे हैं। विथ नॉर्मल ग्लाइसीमिया उनका HbA1c नॉर्मल होते हुए भी 5 साल के बाद उनको टिंगलिंग, नमनेस, न्यूराइटिस के सिम्टम्स मिलने लगेंगे। 7 साल के बाद उनको किडनी की प्रॉब्लम मिलने लगेगी। उसके बाद या फिर ड्यूरिंग दैट पीरियड उनको जो है वो गैस्ट्रोपरेसिस के सिम्टम्स मिलने लगेंगे, स्किन डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स जो है वो मिलने लगेंगे। उनको पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया नहीं मिलेगा, पर ये सभी कॉम्प्लिकेशंस उनको देखने को मिलेंगे। तो डायबिटीज की ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अगर हमें डिसाइड करना है तो प्राइमरी गोल जो है ये नॉर्मोग्लाइसीमिया, सेकेंडरी गोल इन ट्रीटिंग डायबिटीज इज टू अरेस्ट दी सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन, और टर्शरी गोल, तीसरा गोल जो है वो मेंटेनेंस दी होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म, या फिर इम्प्रूविंग द वेलबींग ऑफ द पेशेंट। सो अगर आपको जरूरत पड़ती है और नॉर्मल ग्लाइसीमिया के लिए अगर आपको ग्लाइनेज या फिर एंटी हाइपरग्लाइसेमिक या फिर एंटी डायबिटिक्स का कीमोथेराप्यूटिक्स का यूज करना पड़ता है तो यू मे यूज दिस वन। आई डोंट प्रेफर, बट यू कैन यूज। आज 21st सेंचुरी में जब पेशेंट हमारे पास अपने नॉलेज के साथ आता है, जो भी सच है गलत है मिस्टर गूगल के साथ, डॉक्टर गूगल के साथ आता है, तो हमें ये रास्ता निकालना पड़ता है कि भाई पेशेंट का नॉर्मल शुगर रहे, पर उसके साथ साथ उनको जो कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं वो अगर 5 साल की जगह पर उनको 7 साल या 8 साल या 10 साल पर हो रहे हैं तो दैट इज इम्पोर्टेंट। अगर मान लीजिए 40 साल की एज में उनको डायबिटीज, हाइपरग्लाइसीमिया फर्स्ट टाइम डायग्नोसिस हुआ, डायबिटीज डायग्नोसिस हुआ है, तो उसी चल के उसी से हिसाब से अगर करते हैं तो 5 साल में उनकी किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है 45 की एज पर। अगर वही प्रॉब्लम उनको जो है वो 55 के बाद हो तो दैट इज मेरिट ऑफ द आयुर्वेद। उस हिसाब से हमें जो है ये ट्रीटमेंट प्लान करना पड़ेगा। और आयुर्वेद में अगर हम देखें तो शर्करा का भी कहीं पर उपयोग किया गया है। आज हम डायबिटीज में शर्करा का उपयोग नहीं करते हैं, तो शर्करा का भी उपयोग जो है ये किया गया है। चंद्रप्रभा में शर्करा आती है और ये काफी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है डायबिटीज की, उससे भी ग्लाइसेमिक कंट्रोल होता है। उसी प्रकार से हमें संतर्पण, यहाँ पर जो है ये संतर्पण का लेवल, बॉडी का लेवल हमें जो है टिश्यू का लेवल हमें मेंटेन करना पड़ेगा। अगर हम मेडिसिन से अपतर्पण कर रहे हैं तो कॉम्प्लिकेशन
कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेगा। आज अगर हम मेडिसिन इतनी यूज कर रहे हैं कि जो टिश्यू पेरोक्सिडेशन को अगर वो बढ़ा रहा है तो भी वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। गुल्मक्ष मेहन बस्तिशूल मूत्रग्रह च अपि अपतर्पणेन स्युः। तो ये अपतर्पण जो है ये हमसे ही होगा। हम उसको पेशेंट को डाइट रेस्ट्रिक्शंस दे रहे हैं, उनका मेडिसिन में शुगर्स जो है वो घटा रहे हैं। डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट है, पर हेल्दी शुगर्स जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड लो हो, ऐसे फूड प्रोडक्ट और ऐसी मटेरियल्स का हम यूज करें। शक्कर को यूज करें चीनी या फिर गुड़ की जगह पर नेचुरल शुगर्स का हम यूज करें। मैदे की जगह पर या फिर गेहूं के आटे की जगह पर हम बार्ली जव का यूज करें। पुराणशाली हम यूज करें, व्रीही को यूज करें, तो पेशेंट में ग्लाइसेमिक कंट्रोल जो है ये अच्छा रह सकता है। आई थिंक उससे ज्यादा कोई आंसर चाहिए तो मुझे आप स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ सकती हैं। उज्ज्वला जी। नहीं सर, धन्यवाद सर। वही जैसे कि उनके डेवलप होते हैं ना जो कॉम्प्लिकेशन, तो उसके ऊपर ही हमें कंसंट्रेट करना है, वही मुझे पूछना था। और सर धन्यवाद। वो और तो सर कंसंट्रेट मुझे करना पड़ता है, वो तो एक रिक्वेस्ट कंसंट्रेट थी। करना पड़ता है। हाँ, और सर एक था कि अगर आप कोई संहिता वाचन से लेते हैं तो प्लीज हमें, क्योंकि आप शुक्ला सर जैसे मैंने सुना है, तो आप कितना मतलब बहुत बड़े गुरु के सानिध्य हेतल जी में अगर इसको करें, मैं आपको दवे जी, फोन करती हूँ सर, है ना, और मैं तो डेट्स बहुत हेतल वगैरह अच्छा दवे होगा जी अगर मैम। इसको करती है तो हम ये भी करेंगे। जी हाँ बिल्कुल, मैं जी मैम। आपको हेतल टाइम पे दवे जी को ये कष्ट जो है ये होगा, उनके व्यस्तता से, गृहिणी की व्यस्तता काफी होती है, टीचर भी हैं और एपेक्स इंस्टीट्यूट में काम करती हैं, तो वैसे भी प्रेशर रहता है। और उसके बावजूद आप इतना समय निकाल करके इसको संगठित करना, स्कॉलर्स को बुलाना, तो अगर आप ये कर सकती हैं और अगर मुझे आप नान वान मानती हैं तो मैं यहाँ पर जरूर प्रस्तुत होऊंगा। नहीं, बिल्कुल मैं आपके लिए डेट्स के लिए फ़ोन करती हूँ। बल्कि इनिशियली जब आपने गुरुजी का नाम लिया ना, तभी मुझे 1988 याद आ गया, मेरा यूजी फर्स्ट ईयर। तो जामनगर से ही हूँ मैं भी, गुलाब कौरबा आयुर्वेद महाविद्यालय। तो जैसे ही पहले ही लेक्चर में बीएमएस फर्स्ट ईयर में मैंने गुरुजी का नाम सुना, और फिर तुरंत ही गुरुजी कहाँ रहते हैं उसकी इंक्वायरी की। कहते पटेल कॉलोनी में रहते हैं। और आप देखिए कि मैं चलते चलते पटेल कॉलोनी पहुंच गई, और रास्ते जाते हुए किसी भी व्यक्ति को पूछना कि सर का घर किधर है, तो किसी ने कहा आगे जाके राइट ले लो, इधर से जाके फिर दूसरी गली, और हम गुरुजी के घर पहुंच गए। और जैसे ही मैं अंदर जाने लगी, बहुत लंबी लाइन थी, लोगों ने मुझे जाने नहीं दिया, उन्होंने मुझे पेशेंट समझ लिया। फिर मैंने कहा मैं रोगी नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, और गुरुजी से ऐसे आशीर्वाद लेने के लिए अंदर जाना है। कहते बिल्कुल नहीं जा सकते, लाइन में बैठो, क्योंकि आप जाके अंदर बातें करोगे, हमारी बारी देर से आएगी। तो मुझे लाइन में बिठा दिया, रोगियों वाली में। कहते धीरे 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 ऐसे सरकते हुए लाइन आगे गई, और फिर मेरी बारी आई। तो गुरुजी ने कहा हाँ जी बताइए क्या दिक्कत है। मैंने कहा गुरुजी बीएमएस फर्स्ट ईयर, गुलाब कौरबा आयुर्वेद महाविद्यालय। तो गुरुजी ने तुरंत साइड में खड़ा कर दिया, कहते चलो इधर आ जाओ। और बीच बीच में बातें करते गए, फर्स्ट ईयर के बच्चे को सिखाते गए। और जहाँ जहाँ भी बीच में मुझे चरक संहिता पकड़ा दी, और जो उनके बारे में मेरे गुरुजी ने आयुर्वेद कॉलेज में बताया था कि गुरुजी ऐसे बोलते हैं कि चरक संहिता, है ना, इसका पेज नंबर 236, उसमें नीचे से दूसरा पैराग्राफ है। तो मुझे लगता था कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैंने उसी दिन गुरुजी का, जो भी मेरे आने के बाद वाले सारे जो पेशेंट थे उनमें मुझे गुरुजी ने बता दिया। एक मेडिसिन गोल वाला बता दी, कहते चलो भाई उसमें है ना पैराग्राफ नीचे से दूसरा है, आगे से तीसरा है, ऐसे। तो आप देखिए कि प्रत्येक पेशेंट ठीक हो जाना, उसका सही डायग्नोसिस, ऊपर से मेडिसिन गोल वाला भी टिप्स पे, और चरक संहिता पूरी टिप्स पे। तो मीन्स बहुत बड़ा गुरुजी आदर्श है। और मेरे ऊपर, मैं एमडी फाइनल ईयर तक आई, तब तक भी गुरुजी का बहुत ज़्यादा स्नेह रहा, हमेशा उन्होंने सिखाया। और मैं चाहूँगी
कि एक बार डॉक्टर उज्ज्वला ने हमें कहा भी है, और संहिता वाचन यानी कहाँ से विषय को पकड़ना, किस तरीके से श्लोक का डिसेक्शन करके पढ़ना, ये सच में बहुत ही बढ़िया है कि हम उसको जब अच्छी तरीके से समझेंगे तो मुझे लगता है, मैं बहुत बार कहती भी रहती हूँ कि चरक सुश्रुत जी को बहुत ही हमारे पे गर्व होगा कि मुझे अच्छे अनुयायी मिले हैं, है ना। क्योंकि मैं सोचती हूँ कि ग्रेट ग्रेट साइंस को अच्छे अनुयायी न मिले तो वो कहीं ना कहीं फिर आगे लोगों के ऊपर अपना सही प्रभाव नहीं छोड़ पाती। और हमसे भारतीयों से जो बीच में थोड़ी गलती हुई है, तो अगर हम अच्छी तरीके से आज परिश्रम से जुड़ते हैं, पढ़ते हैं, पेशेंट्स के ऊपर उसको अप्लाई करते हैं, तो मुझे लगता है कि मानवता की बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी और हमारी साइंस के, हमारे आयुर्वेद के अच्छे दिन आ जाएंगे, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं डॉक्टर साहब आपको फ़ोन करती हूँ, और गुरुजी के माध्यम से हमें फिर से ऐसे लगेगा कि गुरुजी ने ही कुछ पढ़ा दिया, क्योंकि बहुत समय हो गया। और बल्कि मैंने किसी को अभी पूछा भी था कि गुरुजी की एक लेक्चर सीरीज है जो जी जामनगर मैम, में मेरे पढ़ता है। मेरे पास है मैम, वो मेरे अच्छा, पास चल है, फिर मुझे मैंने भेजना, सुना। मेरे पास तो है नहीं वो, मुझे वो हाँ किसी मैम। से पता ही चला था, तो मैंने कहा नहीं, हाँ बिल्कुल सुननी चाहिए उसको। और शायद मेरा नंबर है आप पे, है ना, तो डॉक्टर उज्ज्वला जी भेजिएगा, तो मैम। जी मैं मैम, सभी को श्योर भी श्योर। भेजूंगी, और ये सच में सुनने लायक है। तो विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से डॉक्टर साहब निशांत जी शुक्ला, बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद कि आप यहाँ आए और आपने समर्पित भाव से इस ज्ञान यज्ञ में आहुति दी और बहुत अच्छा ज्ञान का वितरण किया। और मैं समझती हूँ कि सभी को ये बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेगा। हाँ जी डॉक्टर ममता, मैं आपको भी वो लिंक भेजूंगी, और सही में ये आपके लिए और आगे आपके स्टूडेंट के लिए भी ये बहुत काम में आएगी। और सभी का, पार्टिसिपेंट्स का भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, और जो डॉक्टर उज्ज्वला, डॉक्टर शशि तिवारी, डॉक्टर उषा, डॉक्टर किमाया, डॉक्टर सबीना, है ना, विश्व आयुर्वेद परिषद के नाम को जो विश्व से अनेक जगह से जुड़े लोग, ऐसा मैं सोचती हूँ, डॉक्टर ममता, है ना, सभी का तहे दिल से धन्यवाद कि आप सभी रेगुलर बेसिस पे आते हैं और इसको इंटरेक्टिव बनाते हैं। प्रश्न और उत्तर का भी बहुत अच्छा सेशन होता है, जो बहुत सारे लोग मुझे कहते भी है कि उसमें से भी बहुत सारी चीज हमें समझ में आई और हमारी क्लैरिफाई हो गई, है ना। तो सभी प्रश्नकर्ताओं का और पार्टिसिपेंट्स का भी तहे दिल से धन्यवाद। तक साहब पुनश्च धन्यवाद जी। सबसे लास्ट में मैं शांति मंत्र ले रही हूँ, आप सभी म्यूट रखकर ही दोहराएंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः। विश्व मंगल की कामना के साथ अपने अपने हिस्सेदारी का कर्तृत्व आप सभी निभाते रहेंगे, और हम अगले शुक्रवार को फिर से नए उत्साह के साथ आयुर्वेद को एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाने के लिए, अनेक श्रेष्ठ वैद्यों को निर्माण करने के लिए फिर से यहाँ उपस्थित होंगे, और सब मिलके हम आयुर्वेद के लिए काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अच्छा सर, एक बुक कहाँ मिलेगी, डॉक्टर उज्ज्वला पूछ रही है, लास्ट वाला ये क्वेश्चन। ऑनलाइन भी अवेलेबल है, चौखंबा ओरिएंटेलिया से ये मेरी बुक पब्लिश्ड है। ये इमरजेंसी मेडिसिन, श्रीनिवास जी ने ये सवाल किया था मायस्थेनिया ग्रेविस पर, और उस चीज को मैंने इस बुक में लिखा है, काफी डिटेल में इस पर चर्चा रखी है, तो उसमें से उनको ये आंसर मिल जाएगा। ये 2019 में ये पब्लिश हुई है, और इस बुक को मैं दादाजी के जो एक्सपीरियंसेस थे, उनकी जो थियरी प्रैक्टिस थी, मेरे एक्सपीरियंसेस थे ट्रीटमेंट के, तो थियरी और प्रैक्टिकल दोनों को मिला करके ये बुक जो है ये लिखी हुई है, और ये चौखंबा ओरिएंटेलिया ने पब्लिश किया है। ये लीडिंग बुक स्टॉल पर भी है, अवेलेबल है, और ऑनलाइन भी अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पर और अमेजोन दोनों पर ये अवेलेबल
है। टेम्पररी शायद अनअवेलेबल हो सकती है, पर ये दोनों प्लेटफॉर्म पर ही अवेलेबल है। यानी पुस्तक का नाम ही डॉक्टर साहब ये है, इमरजेंसी मेडिसिन, ऐसे? या हाँ हाँ, ओके जी, मैं आपको शेयर कर दूंगा उसका ठीक है जी, उसका स्नैप मैं आपको शेयर कर दूंगा। जी जी डॉक्टर साहब, ठीक है। और डॉक्टर उज्ज्वला? जी मैम जी, ठीक ओके है। ओके ओके, थैंक यू बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।